Chapter 1, Unit Dimension and Measurement. Physical quantity. The quantity which can be measured and by means of which we describe the law of physics are called physical quantity. It means that the quantity can be measured होती है and by mean of which we describe the law of physics, और हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स के. दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वेलोसिटी एक्सेट्रा. On the other hand, various happening in life, example happiness, sorrow, etc., are not physical quantity as these cannot be measured. This is not so important. Classification based on their directional properties. Scalar property. The physical quantity which have only magnitude but no direction are called scalar quantity. Example mass, length, density, etc. which have only magnitude and no direction. सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई भी डायरेक्शन नहीं, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल मास, लेंथ, डेंसिटी एक्सेट्रा. Vector quantity. The physical quantity which have both magnitude and direction are called vector quantity. तो physical quantity which have, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा. नोट. These are some physical quantities which are not completely specified even by magnitude, unit and direction. These physical quantities are called tensor, moment of inertia, stress, permittivity, etc. Based on their dependency, fundamental or base quantity. Fundamental quantities रखते हैं. The physical quantities which are independent of each other and all other quantities are called fundamental or base quantity. So physical quantities which are independent on other quantity, each other or all other quantity, जो दूसरी या तो कोई और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो वैसी क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी. एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा. Derived quantity. Any physical quantity which can be derived from the fundamental physical quantity by multiplying or dividing them in is called derived physical quantity. Any physical quantity which can be derived from fundamental quantity. कहाँ से डिराइव होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग थेम. मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इससे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल स्पीड, डेंसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. टॉपिक यूनिट. Unit is a standard quantity with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it. Unit is a standard quantity. What is unit? Oh, unit is a standard quantity with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it. Same kind of physical quantity यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो कंपेयर्ड होती है. किस लिए? उसको मेजर करने के लिए, यूनिट मेजर करने के लिए. तो इसका फॉर्मूला क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू यू, वेयर एन रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू
एन क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू रिप्रेजेंट्स द यूनिट, एंड यू रिप्रेजेंट्स द यूनिट, यू क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट. Thus, while expressing the definite amount of physical quantity as the unit u changes the magnitude n, will also change the product, nu will remain same. Example, nu is equals to constant or n1 u1 is equals to n2 u2 is equals to constant. ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर दिया था कि हम जब डिफाइनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, डिराइव करने जाते हैं, तब यूनिट चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, बट प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है. हैंस एन प्रोपोर्शनल 1/u, इट शोज दैट स्मॉलर the unit of physical quantity, larger will be the magnitude and vice versa. Larger होता है magnitude और vice versa and vice versa. System of units. So first is CGS system. In this system, the fundamental quantities are length, mass and time, and the respective units are centimeter, cm, ग्राम, g एंड सेकेंड s. तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ, मास और टाइम. देयर रिस्पेक्टिव यूनिट, यानी कि उसके रिस्पेक्टिव जो लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स है वो क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. FPS सिस्टम. In this system, length, mass and time are taken as fundamental quantity, and their units are foot, pound and second respectively. इसमें ये सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिए जाते और उसके यूनिट्स क्या है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड. MKS system. In this system also the fundamental quantities are length, mass and time, but their fundamental units are meter, kilogram and second respectively. तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो तो सेम ही है, लेंथ, मास और टाइम, पर उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या होगी, चेंज, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है SI यूनिट. SI यूनिट, दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ओवर MKS सिस्टम एंड सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम. In SI system there are 7 fundamental units and 2 supplementary units. मॉडिफिकेशन ओवर द MKS सिस्टम, इसमें मॉडिफिकेशन है MKS सिस्टम का. ऑल्सो रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम है और इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स. मास क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर. यूनिट किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल. सिंबल केजी, स्मॉल m, s, k, cd, capital A, mole. Beside the above 7 fundamental units, 2 supplementary units are also defined, radian and as steradian. Radian stands for plane angle and steradian stands for solid angle. Some definitions of fundamental units in SI system. Meter. 1 meter is the distance accommodates 1650763.73 waves in vacuum of orange red light emitted by KR36. So 1 meter
is the distance which accommodates means देना 1650763.73 waves in vacuum of orange red light emits किससे के R36 से kilogram. 1 kilogram is the mass of platinum iridium cylinder of diameter equal to its height, which is preserved in a wallet at International Bureau of Weight and Measure serves near Paris. 1 kilogram क्या है? The mass of 1 liter water at 4 degrees Celsius. Second, 1 second is that amount of time in which a cesium-33 atom make 9192531700 vibration in cesium watch. So 1 second क्या है? Amount of time in which a cesium-33 atom make cesium-33 का एटम बनाता है क्या 9192631770 वाइब्रेशन इन अ cesium watch. Ampere. 1 ampere is that electric current which, when passed through two parallel conductors of infinite length and of negligible cross section placed at unit distance apart, produce a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. 1 ampere is that electric current in which two parallel conductors pass through two parallel conductors of infinite length of negligible cross section placed at unit distance पे प्लेस किया गया negligible cross section और two parallel conductor of infinite length से पास होता है, produce a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Candela. It is the luminous intensity in a direction at right angle to the surface of a black body. Luminous intensity in a direction of right angle direction में luminous intensity to the surface of a black body. To the surface of a black body at a temperature equal to melting point of platinum under pressure of 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्लेटिनियम के मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे अंदर जो प्रेशर होता है उस तरीके का प्रेशर होता है लुमिनियस इंटेंसिटी में. If you like the video, please like, share and subscribe this video and comment around 10 comments please. Thank you so much.